न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ब्रेन थ्रू लैंग्वेज। डीप अंडरस्टैंडिंग आती है अपने मुतालिक, अपनी जात के मुतालिक और दूसरों के मुतालिक। This is one of the first things in my courses. ये जो चीज I have used one of your techniques in my sales and it closed. अब लगता है कि जो मेरा एक स्किल लेवल है शायद मुझे वो पहले महसूस नहीं हो रहा था। क्योंकि I feel like I need it. Because I can. Look, I am way better than I thought I would be, you know. If you're getting training in Pakistan, I want to recommend that you train with Kamran. Kamran Sultan. He is fantastic and I highly recommend him. Highly recommend. If you want to learn NLP, learn from the best in Pakistan, learn from Kamran. I transformed as a human being, as a mother. मेरी पेरेंटिंग बहुत इम्प्रूव हुई विद माई डॉटर्स, माई रिलेशनशिप इम्प्रूव्ड। इसके अलावा मेरे हस्बैंड के साथ मेरे रिलेशनशिप्स बहुत इम्प्रूव हुए। आफ्टर दिस ट्रेनिंग आई कैन सी कि द मीनिंग ऑफ माय लाइफ हैज जस्ट चेंज्ड। यहाँ से अपनी लाइफ को पीछे की तरफ देखता हूँ, 5 साल पीछे की, और आज जब मैं अपने आप को देख रहा हूँ तो एक डिफरेंट इंसान की सूरत में अपने आप को देख रहा होता हूँ। So, it's like ये जो हम information हम brain में process कर रहे हैं. As I said, we have sight, sound, touch, smell, taste. These are the 5 senses. और हमने बात की हमारी जो language है, it is the literal representation of what we are doing in our brains. इस language को, इसकी जो processing है, इसमें जो हमारे 5 senses हैं, इनको NLP में हम कहते हैं representational systems. Okay, so हम में से हर एक अपने इन तमाम सेंसेस को इस्तेमाल करता है। हमारा कोई एक सेंस दूसरे के मुकाबले में निस्बतन ज्यादा इस्तेमाल होता है। मसलन मैं अपना लेफ्ट हैंड भी यूज करता हूँ और राइट भी यूज करता हूँ, मगर मैं अपना राइट हैंड ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए मुझे राइट ही कहेंगे। मेरी बेटी है, वो अपना लेफ्ट हैंड ज्यादा यूज करती है, वो राइट भी यूज करती है, वो खाती सीधे हाथ से, वो लेकिन लिखती उल्टे हाथ से, सो उसको हम लेफ्ट हैंडेड कहते हैं। मगर अगर हम किसी को कह रहे हैं कि वो लेफ्टी है या कोई राइटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना दूसरा हाथ इस्तेमाल नहीं करता, इसका मतलब ये है कि इसका डोमिनेटिंग सेंस ये है। इसी तरह एनएलपी में हम कोई शख्स अगर किसी का सेंस ऑफ साइट डोमिनेटिंग होता है तो हम कहते हैं ये शख्स ज्यादा विजुअल है, या ये हेयरिंग वाला है तो हम कहते हैं ऑडिटरी है, या अगर फीलिंग वाला है तो हम कहते हैं किनेस्थेटिक है। बट इसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि वो विजुअल है तो वो कोई दूसरा सेंस इस्तेमाल नहीं करेगा, या किनेस्थेटिक है तो कोई दूसरा सेंस इस्तेमाल नहीं करेगा। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि वो उसका ये एक सेंस है जिसको वो निस्बतन ज्यादा इस्तेमाल करता है। ओके, सो इन सेंसेस को थोड़ा सा हम ब्रीफली देखते हैं। आई एम शेयरिंग विद यू अ कपल ऑफ स्लाइड्स फ्रॉम माय एनएलपी प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हमारी जो 5 सेंस, इसमें जो सबसे पहला सेंस है, that's what we call the visual sense. Visual, दूसरा हमारे पास auditory, तीसरा kinesthetic, चौथा olfactory and पांचवा gustatory. ये जो visual sense के लोग होते हैं, तकरीबन 60% लोग दुनिया में, उनका जो dominating sense होता है, that's visual. तकरीबन 60% लोगों का dominating sense is visual. Okay? इन लोगों के चंद general characteristics होते हैं। अगर यानी फर्स्ट करो somebody into your office, you look at them, by looking at them you can get an idea इसका जो major processing है वो visual है। And why would that be important for us? Think about it like this, कि you know that this person understands Urdu only. So आप उसके साथ अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप उसके साथ कोई रिलेशनशिप बिल्ड करना चाह रहे हैं, आप उसके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, आप उसको इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं, आप उसके साथ अंग्रेजी अगर झाड़ेंगे काम नहीं होगा। इसी तरह अगर फर्ज करो कोई शख्स जो है वो अरबी जानता है और वो अरबी ही बोलता है, आप उसके साथ उर्दू, सलीस उर्दू बोलें या मुश्किल उर्दू बोलें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको खाली अरबी ही समझ में आता है। आप अगर उसके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आपने अरबिक में ही बात करनी है। ओके, सो यहाँ हम ये जो बात कर रहे हैं ये बेसिकली ब्रेन की प्रोसेसिंग लैंग्वेज है। सो हमने जो बात करी कि हमारी जो परसेप्शंस है, हमारा जो बिहेवियर है, इट इज बेस्ड ऑन आवर परसेप्शंस, मगर ये जो परसेप्शंस है उसकी जो फॉर्मेशन है
कुछ लोगों के जहन में पिक्चर्स होंगी, दे आर मोर विजुअल। कुछ लोगों के जहन में इंटरनल वॉइसेस होंगी, दे टॉक टू देमसेल्व्स। कुछ लोगों को फीलिंग्स होंगी, कुछ लोग मुझे लगता है, मुझे लगता है, मुझे लगता है। कुछ होंगे मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ। कुछ होंगे जी मुझे, मैं देख रहा हूँ, मुझे नजर आता है। इट्स लाइक मोस्ट पीपल, दैट्स अबाउट 60% पीपल, उनका जो डोमिनेटिंग सेंस है वो विजुअल सेंस होता है। इनके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये है। आमतौर से ये लोग दुबले होते हैं। आमतौर से जब आप इनको देखेंगे, इनकी जो ब्रीदिंग होगी इट विल बी हाई इन चेस्ट। ये लोग जब बात करते हैं तो हाई पिच्ड आवाज में बात करते हैं। जैसे मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, ये जब बात करते हैं तो ज्यादा तेज तेज बात करते हैं। ये लोग जब बात करते हैं तो आवाज इनकी देखिए हाई पिच होगी। जैसे इस वक्त मेरी आवाज आपको अगर सुनाई दे रही हो, मुझे नहीं पता कि बाय द वे माइक के ऊपर ये आवाज कितनी ज्यादा हाई पिच जाती है, बट यू नो व्हेन दे स्पीक फास्टर। और जब ये बात करेंगे ना, इनके इशारे ऊपर की तरफ होंगे। हाँ, okay? आपने उनसे कोई सवाल किया, हाँ लेट मी सी, एज इफ कोई सवाल का जवाब जो है ना कहीं ऊपर लिखा है। एंड देयर आईज विल मूव अप। ओके, दीज आर about 60% of people. Then second जो लोग हैं इस पे, that's 20% of people, इनका जो dominating sense होता है ये auditory sense होता है। okay? ये लोग, इनके जो general characteristics हैं, आमतौर से ये जिसे हम कहते हैं उर्दू में दरमियानी काठी के लोग होते हैं। okay? ना मोटे हैं ना बहुत दुबले हैं। ये लोग जब सांस लेते हैं तो इनकी सांस आपको इनके डायफ्राम से नजर आएगी। Okay, it's like their breathing. जो विजुअल वाले हैं उनकी यहाँ से होगी, इन लोगों की यहाँ से होगी। जब ये बात करते हैं ये थोड़ा ठहर ठहर कर बात करते हैं। जब ये बात करेंगे आप देखेंगे इनका सर एक साइड पे टिल्ट होता है, जैसे फोन पे इंसान बात करते होता है। ओके, इधर या इधर। और जब ये बात करते हैं इनकी आंखें जो हैं इनके कानों के लेवल पे मूव करती हैं, और इनके जो जेस्चर्स होते हैं, हाँ, यू नो, सो दे आर लाइक पॉइंटिंग टुवर्ड्स देयर ईयर। विजुअल वाले दे आर पॉइंटिंग अप, they are pointing at this level. Okay, और इनके जो अल्फाज होंगे वो ज्यादातर ऑडिटरी हेयरिंग सेंस वाले होंगे। Okay, and इनकी आवाज में you will find they have more resonance in their voice as they speak, and as I said they speak at medium pace, they speak slower than the visuals. Okay, and so इनके जो अल्फाज होंगे, you know, announce, articulate, audible, गॉसिप, हियर, अगर आप बातों को गौर से सुने तो आपको बहुत सारी चीजें सुनाई देंगी जो कि आपको आम उसमें नहीं होंगी। जो चीजें बैठ के डिस्कस करनी चाहिए, जब बातें बैठ के डिस्कस करते हैं तो फिर पूरी कहानी पता चलती है। अब आप गौर करें, ये जो जुमला है, बैठ के डिस्कस करते हैं तो कहानी पता चलती है। अगर इसी जुमले को विजुअल सेंस में बात करें तो हम कहेंगे, अगर हम बैठकर पूरी तस्वीर पिक्चर देखें तो फिर सारी तस्वीर सामने आएगी। ओके, वो कह रहे हैं बैठकर डिस्कस करें, ये कह रहे हैं पूरी पिक्चर देखें। सो ये एक ही इवेंट के बारे में बात कर रहे होंगे, बट सिंस एक विजुअल में बात कर रहे हैं, एक ऑडिटरी चैनल में बात कर रहे हैं, इनकी कम्युनिकेशन में आपको लगेगा कोई गैप है। डू यू अंडरस्टैंड? इट्स लाइक एक उर्दू बोल रहा है, एक अंग्रेजी बोल रहा है, एक फारसी बोल रहा है, एक पंजाबी बोल रहा है। Okay, it seems that there is some gap. They are talking about exactly the same thing. It's just because उनका जो communication का channel उन्होंने इस्तेमाल कर रहे हैं वो different है। As a result उनके उसमें gap होता है। I remember मैं IB में था, हम लोग communication skills का course कर रहे थे, तो उसमें हमें communication skills की जो definition बताई, it's like communication is a two-way process. Okay? And they say there is a sender and there is a receiver. The sender sends the message and the receiver receives the message. When the message is sent, there in between the sender and the receiver there are noises. As a result, the message sent never equals the message received. That's all crap. इसमें एक और चीज़ है, 50% is the responsibility of the sender and 50% is the responsibility of the receiver. The sender sends the message and receiver receives the message. In between, because of the noises, the message is never received correctly. Okay, that's a very bad idea, by the way, in terms of communication. It's what we say in NLP is that you are 100% responsible for your communication. By paying attention to who we are communicating with, हम अपनी communication में हमारे अंदर as practitioners of NLP इतनी flexibility हो कि हम अपने लहजे में, अपने अंदाज में
लचक लाके अपने तरीके को तब्दील करके अपनी बात अगले तक पहुंचा सके. Okay, so यहाँ पर जो auditory है, that's about 20%. As I said, it's like मैं यहाँ पे exercises में नहीं जा रहा हूँ. I'm not going into a lot of details, but just to give you an idea, so you have a statement. I've heard that there are some rumors spreading around that I want to announce something important. So please listen carefully, because for now, all I can tell you are some secrets of great public speakers. But before I utter a word about that, I want you to listen to your voice. Do you speak audible enough or not? Then hear your tone and pitch. Do you sound harsh or shrill? Now, इसमें जितने words brown में आपको नजर आ रहे हैं या orange में आपको नजर आ रहे हैं, these are all auditory words. Okay? अगर इसमें जो पिछली वाली slide थी, इसके last इस पैरा को देखा, I know you want me to show you various angles how your view of life will change as a result of learning NLP. But instead of me pinpointing that for you, I want you to picture for a moment and imagine, if you must, yourself demonstrating your NLP skills and your life changing. Perhaps this was only a dream, a vision that appeared in your mind, but you did not notice. Obviously, you did not have even a vague idea about NLP. However, as things get more clear, you may start focusing on other people as you observe them. आप गौर करें, इसमें जितने भी blue words हैं, these are all visual words. When you are communicating with people and you use the same language that they use, you will be building stronger connection with them, because brain likes similarities. Brain likes similarities. Now, this could be a person in a coaching session with you. This could be a person, your spouse. This could be a child. This could be an in-law, a neighbor, a friend, doesn't matter, another human being. Because you will connect with them because you are speaking to them, their language. Yaad rakho, brain likes similarities. इंसान का ज़हन similarities को पसंद करता है. So उसकी जब आप उसके साथ वो language use कर रहे हैं जो उसके ज़हन के लिए familiar है, जो उसके लिए similar है, that person will tell you, you make a lot of sense. And the reason you make a sense is not because you really make sense, because you're using the language that they understand. Because you are communicating in a way that they understand. Do you get this? So, इसके बाद जो तीसरा sense है, visual, auditory. Third is, I'll not go into all of them, by the way. Okay, that's kinesthetic. That's about 10%. Okay, so 10% are generally heavy physique वाले, थोड़े से मोटे जिससे हमारे यहाँ. Okay, they generally you will find they breathe from lower abdomen. Okay, they have deep voices. They speak at slow pace, and they want to touch as they speak. And when they're looking, they will find their eyes look down towards their right. Okay, so they want to touch you or touch someone or something and looking down. Okay, एहसास ही नहीं रहा है जनाब लोगों में, बेहिस हो गए. एक पहले जोश होता था, एक गर्मी होती थी, तो सब ठंडे पड़ गए. Okay, so like people talk, it's like ठंडा गरम लगना, it's just like एहसास, बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही है. Okay, so they are talking about, they are telling you that using kinesthetic sense. और करो, ये सारी खेल observation का है, सारा खेल observation का है, सारा खेल paying attention का है. If you are paying attention, you will notice ये language कैसे use कर रहा है. If you are paying attention, you will notice कि इसके अल्फाज कैसे हैं. If you are paying attention, you will be connecting with them. When you are connecting, you will be able to influence them. You will be able to help them change. Okay, so the key here, the foundation जो मैंने आपको दिया, that's paying attention. अगर आप इस चीज पे काम करना शुरू कर दें, ये 3 घंटे का ये session, you will find this will actually help you change a lot of things in your life, solve a lot of problems for you. Okay, so
especially in your relationships. So the kind of words these kids may आप सुनेंगे: active, affected, bearable, callous, charged, concrete, emotional, feel, firm, flow, foundation. So here's an example. Everyone wants to have firm grip on life. To grasp the reality of life, one does not need to take stress or tension because there is no pressure here. Some people want to get settled, but without a solid foundation on basic understanding of life, will get muddled. आप अगर गौर करें, ये जुमला जो कुछ यहाँ पर लिखा है, it doesn't really make any sense. But for a person who is more kinesthetically oriented, it will make perfect sense to them. Okay, so even इसके अंदर kinesthetic के बाद olfactory gustatory भी है, but I'll not get into that. I just wanted to introduce this concept to you to give you an idea. Here's the tip: how do you use this? एक चीज तो ये होती है, you can go and search kinesthetic word and olfactory word and visual words. Here's the easiest thing that you can do: pay attention to people. Notice the kind of words they're using and use their exact words back to them. It's that simple. It's that simple. Okay. पर एक चीज ऐड करना चाहूंगा। 2017 में जब मैंने NLP का लाइसेंस प्रैक्टिशनर किया था, और जब हम ये सारी ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक, इन सारी चीजों को हम डिस्कस कर रहे थे, तो सर आपने एक बहुत प्रैक्टिस करवाई थी, इन तीनों 5 सेंसेस को यूज करने की एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करवाई थी। और जब आपने मैनुअल दिया था सर, मैनुअल के अंदर जो एक्सरसाइज आपने दी थी, मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे बताना चाह रहा हूँ कि वो प्रैक्टिसेस, वो एक्सरसाइज को मैंने इतना अप्लाई किया कि जब मैं अपनी वाइफ के साथ बात करता हूँ या बच्चों के साथ बात करता हूँ या पेरेंट्स के साथ, और उस जमाने में मैं जॉब किया करता, जब अपने कोलिग्स के साथ उन स्किल्स को यूज करने लगा, तो मेरे रिलेशनशिप्स उनसे बहुत ही स्ट्रांग होने लगे। मैं अपनी बातों को कन्वे करने में कामयाब हो गया और उनको भी मैं समझने में कामयाब हो गया। तो वो जो NLP की जो प्रैक्टिशनर लेवल पर जो आपने प्रैक्टिसेस करवाई थी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी सर। सो थैंक यू वेरी मच सर। उस प्रैक्टिसेस ने मेरी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा आसानी पैदा की लोगों से कम्युनिकेट करना। थैंक यू। Sure. Okay, so let's move on to the next thing. I'll stop recording here.